बैंगल्स, इयररिंग्स, नेक पीस, ब्रेसलेट। हाय, आई लव एक्सेसरीज यार। आपको भी पसंद है ना? तो क्यों ना आज घर में पड़े मटेरियल से एक्सेसरी बनाई जाए। लेकिन हम कौन से मटेरियल से एक्सेसरी बनाएंगे? हम थ्रेड्स और पोम से एक्सेसरी बनाएंगे। वो कैसे, वो हम सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने फैशन एंड ग्राफिक वर्ल्ड की छोटे सी दुनिया में। मैं आपकी अपनी रुचिका और मेरी टीम आपके लिए इस चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो भाई मैं कह रही थी क्यों ना आज थ्रेड्स और वूल के पोम से इयररिंग्स बनाए जाएं। गाइस, इयररिंग्स बनाने के लिए हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, लाइक सिल्क थ्रेड्स, वूल पोम्स, इयररिंग हुक्स, फेविकॉल, सीजर, आर्टिफिशियल मिरर, स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड और थ्रेड और नीडल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें हमारी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए कुछ अमेजिंग सीखते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा हमने घर में पड़े मटेरियल से इयररिंग्स कैसे बनाए। तो गाइज आप भी इसे घर में ट्राई जरूर करें, अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटीज, अपने इनोवेटिव आइडियाज इसमें डालें। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें भी अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।